Hi and welcome to Asian Photography's YouTube channel. My name is Bhavya Desai and today is all about the OnePlus 9 Pro. तो OnePlus 9 सीरीज जो है ये रिसेंटली लॉन्च हुई थी एंड हमारे पास दोनों OnePlus 9 Pro और OnePlus 9 है जो हम काफी टाइम से टेस्ट कर रहे हैं. But the reason why we haven't featured the review yet is because we wanted to test the cameras out completely in totality. Because अभी ये दोनों कैमरास के पीछे एक्चुअली Hasselblad की ब्रांडिंग आ गई and that tie-up is very significant. So in this video we are going to focus only on the OnePlus 9 Pro cameras and we will be comparing it with the iPhone 12. So now the reason why we are comparing it with the iPhone 12 is because मुझे लगता है कि काफी टाइम कंज्यूमर्स जो होते हैं वो हमेशा एक प्राइस पॉइंट सोच के कैमरास या फोन्स पिकअप करते हैं. So we thought a lot that we should compare the OnePlus 9 Pro with the iPhone 12 Pro, but that just didn't make sense. So hence we decided that this is the best choice. तो ये वीडियो में we will be comparing the OnePlus 9 Pro cameras with the iPhone 12 cameras and see how they do. So जो OnePlus 9 Pro है ये अवेलेबल है दो वेरिएंट्स में, दैट इज द 8GB रैम विद 128GB कैपेसिटी एंड 12GB रैम विद 256GB कैपेसिटी. इसकी प्राइस है 65,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली एंड इन कंपैरिजन द iPhone 12 स्टार्ट्स ऑफ in the online pricing at around 74,000 and it is maxed out at 95,000. अभी ये जो है OnePlus 9 Pro हमारे पास that is the 12GB RAM 256GB capacity का and the iPhone is basically 128GB capacity. So before we get into comparing the cameras, let's just talk about Hasselblad first. तो जब से OnePlus ने वो मून का इमेज टीज करना शुरू कर दिया था तब से lot of people in our industry already knew कि ये tie-up जो है 9 series का OnePlus will do with Hasselblad. And over the next 3 years, as per their statement, both will be investing close to $150 million into this partnership. But ये साल का जो OnePlus 9 series के साथ जो Hasselblad ने help किया है, that's more of color toning के साथ में that is help. And honestly, this is a very critical moment also for OnePlus. The reason is because बहुत सारे competing brands जो है, उन्होंने already काफी अच्छे कैमरा और लेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाइप किया है, and that sometimes can play an important role in the minds of the consumer. तो ये जो टाइप है ये काफी इंपॉर्टेंट भी है OnePlus के लिए एंड ऑल्सो अगर आप काफी सारे OnePlus के फोन यूज करते हैं जस्ट लाइक मी ओवर द इयर्स देन यू विल नो दैट समवेयर समहाउ OnePlus कैमरास एंड द परफॉर्मेंस विल ऑलवेज लेट द फोन डाउन एज कंपेयर टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस बिकॉज हमेशा उसके स्पेक्स काफी अच्छे होते हैं. द फोन ऑल्सो इज वेरी फास्ट, इट परफॉर्म्स एक्सट्रीमली वेल, बट समहाउ द performance of the cameras will always let you down. So this is a very critical moment when it came to the 9 series and this tie-up. So let's take a look at the images side by side और जो comparison हमने दिया है. So let's take a look at the daylight images first. In terms of the daylight images shot from the main camera, both the cameras ने deliver किया है काफी good, sharp and crisp images. They both really shine here. और जैसा आप देख सकते हैं जो इमेजेस हमने शूट किए उसमें काफी अच्छे डिटेल्स एंड इमेजेस काफी अच्छे कैप्चर भी हुए हैं, सैचुरेशन भी काफी अच्छा है और शार्पनेस भी बहुत ही अच्छा है. बट जो कलर एक्यूरेसी है OnePlus की दैट इज स्लाइटली ऑफ एज कंपेयर टू द आईफोन हियर. यू कैन सी कि OnePlus जो है वो थोड़ा सा ब्लूइश टिन जो है वो पैंट्स को ऐड करा है और ये टी शर्ट भी जो है वो थोड़ी सी लाइटर आई है देन व्हाट इज इन द एक्चुअल इमेज. लुकिंग एट द इमेजेस इन द डे लाइट विद द अल्ट्रा वाइड लेंस, अगेन द इमेजेस आर वेरी शार्प, दे आर प्रीटी क्रिस्प. बट अगेन जो OnePlus Pro है वो काफी उसे शार्पन करता है इमेजेस को पोस्ट क्लिकिंग, जो उसे थोड़ी सी अंडर एक्सपोज दिखाती है. As you can see from the images, जो iPhone 12 जो है वो better exposed है and the images from the 9 Pro are slightly under. Now I think that this is something that can easily be fixed with a software update, but the new ultra wide lens is pretty good as you will see in the video ahead. In the daylight portrait mode ये both जो दोनों जो images है ये again काफी sharp और अच्छी आई हैं, but 9 Pro जो है that benefits from the एडिशनल मेगापिक्सल्स एंड जूम इन करने पे आपको देख सकते हैं कि ये काफी शार्प है इन कंपैरिजन विद द iPhone 12. Although the image is still underexposed and over sharpened, which doesn't make the picture look natural, but the iPhone does master the edge detection जो काफी अच्छा और स्मूथ है इन कंपैरिजन विद द 9 Pro. और अगर आगे के फ्रंट फेसिंग कैमरा के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी काफी शार्प है और इनफैक्ट 9 Pro जो है ये स्लाइटली कूलर टोन ऐड कर रहा है.
The images are over sharpened and look more natural in the portrait mode, but seems much better on the iPhone 12 as compared to the 9 Pro, with the background blurring slightly more and also better edge detection. When it comes to shooting landscapes in daylight, the images are good but again seem more natural in the iPhone 12 and properly exposed. और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ओवर शार्पनिंग है वन प्लस की वो उसे थोड़ा सा हर्ट करती है, बिकॉज जूमिंग इन पे जो क्वालिटी है ये काफी ड्रॉप होती है, एज यू कैन सी फ्रॉम द जूम्ड इन इमेज हियर. बट व्हाइल यूजिंग द वाइड एंगल लेंस जो 9 Pro है, दैट कैन नॉट ओनली फिट मोर इन द फ्रेम बट ऑल्सो द इमेज इज स्लाइटली बेटर इन परफॉर्मेंस देन द iPhone 12. As the light drops in the evening, तो थोड़ा स्लाइट शार्पनिंग जो है इसके इमेज में, ये जो इमेज को है वो काफी अच्छा और बेटर दिखाता है टू द नेकेड आई एज कंपेयर टू व्हाट यू सी इन द iPhone 12. और जूमिंग इन करने के पे भी आपको दिखेगा कि इसका जो पिक्सेलेशन है ये थोड़ा लेस है इन कंपैरिजन विद द iPhone 12. Now we just didn't take a lot of outdoor daylight images, but we also tested the phones in the indoor environment. So let's first see the images जो मेन कैमरा से हमने शूट किए हैं. जो इमेजेस हमने मेन कैमरा से शूट किए हैं वो काफी शार्प और वेल सैचुरेटेड आए हैं, और ये iPhone 12 वंस अगेन सीम्स मोर नेचुरल इन कंपैरिजन विद द 9 Pro. बट ड्यू टू द कॉम्पेंसेशन ऑफ द 9 Pro, ये इमेजेस जो है वो बेटर एक्सपोज्ड एंड प्लीजिंग टू द आई लग रही हैं. Although इसका जो it did take us a few tries to get the images right and the colors also right. बट जूमिंग इन करने पे अगर आप देखेंगे तो ये 9 Pro जो है उसके इमेजेस शार्पर भी लगते हैं, बट दे ऑल्सो लुक स्लाइटली ग्रेनी बिकॉज ऑफ द ओवर शार्पनेस. वाइल जो 12 जो है वो डेफिनेटली काफी शार्पनेस इसका लूज किया गया है इस डिपार्टमेंट में. इन टर्म्स ऑफ द इंडोर पोर्ट्रेट मोड जो इमेजेस है वो iPhone 12 से सीम्ड स्लाइटली मोर सैचुरेटेड देन द OnePlus 9 Pro. इसका मतलब ये है कि वंस अगेन 9 Pro जो है वो इमेजेस को काफी प्लीजिंग टू द आई दिखा रहा था. However, जो iPhone है it continued to trump the edge detection even in indoor conditions, and also जो इसका blur effect है ये काफी natural and seamless था. अभी distortion check करने के लिए हमने ये कैमरा से काफी सारे images shoot किए हैं, because many of you always tend to ask us in the comments कि why is the phone making me look thinner or fatter. And honestly, I was shocked with the level of distortion that the wide and telephoto shots that both the phones displayed. ये जो इमेजेस जो हमने खींची है मेन कैमरा से, दैट सीम फाइन, बट द मोमेंट वी वेंट वाइड बोथ द कैमरास मेड मी लुक मच थिनर एंड समवॉट मैलनरिश्ड. और इसे जब जूमिंग इन में हमने यूज किया तो 3x जूम के जो पिक्चर्स हैं दैट लिटरली शोड 2 ऑफ मी इन द फ्रेम. सो इस डिपार्टमेंट में दोनों जो कैमरास थे इसका परफॉर्मेंस काफी शॉकिंग था ऑनेस्टली, एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. नाउ यूजुअली व्हेन यू यूज द फोन कैमरास देन लो लाइट इमेजेस आर नॉट ऑलवेज दैट ग्रेट. और ये केस में भी जो रिजल्ट्स जो हमें मिले हैं वो काफी मिक्स्ड हैं. When you see the image that I shot of my room from the main camera of both the phones, then you can see कि एक slight purple tinge है in the pic of the OnePlus 9 Pro, whereas the iPhone 12 जो है that seems to have captured the image as is. बट जब ये आप जूम इन करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि OnePlus 9 Pro का जो इमेज शार्पनेस है वो काफी बेटर है 12 Pro के कंपैरिजन में. और यही सेम चीज जब ये आप वाइड एंगल लेंस यूज करके शूट करेंगे तो ये पर्पल टिन जो है ये थोड़ा सा कम हो गया है 9 Pro में, ऑल्दो इट इज स्टिल बेटर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी अर्लियर. बट जो 12 Pro है इसमें अभी भी काफी अच्छा और नेचुरल लुक आता है. लो लाइट पोर्ट्रेट के बारे में अगर हम बात करें, ये दोनों फोन्स जो है ये डिस्प्ले करते हैं काफी अच्छी क्लैरिटी, सैचुरेशन एंड डेप्थ. जो इमेज भी हमने शूट किया है उसमें जो iPhone 12 है उसका image quality थोड़ा सा better है as compared to the 9 Pro. The iPhone 12 has correctly saturated the image, capturing the true scene as compared to the 9 Pro, जो थोड़ा सा image को portrait mode में थोड़ा सा light कर देता है. Now, when it comes to capturing nightscape images, both the cameras have a completely different method to capture images in the night mode using AI. तो 9 Pro जो है वो आपको फोन एकदम स्टेडी होल्ड करने के लिए बोलेगा while it takes the pictures, एंड इसके कंपैरिजन में iPhone 12 जो है ये मैप करेगा नंबर ऑफ सेकेंड्स जो आपको शूट करना है यूजिंग द एपर्चर बिफोर इट कैप्चर्स द पिक्चर. The images in both cases are at best okay. Not great since these sensors are not really built to give you great output nightscape में. बट 9 Pro जो है ये वंस अगेन बेटर शार्पनेस मेंटेन करता है अगर आप जूम इन करके देखेंगे इन कंपैरिजन विद द iPhone 12. तो इस डिपार्टमेंट में आई वुड से कि इजीली 9 Pro इज अ मच बेटर
player than the iPhone 12. Now there are some new things when it comes to the OnePlus 9 Pro in the camera department, and first of which is the super macro mode. जो iPhone 12 है, now that misses out in the super macro mode, and honestly that's something which I really would have liked to see, because जो OnePlus 9 Pro का macro mode है, that is just phenomenal. I really enjoyed getting up close and personal with a lot of the subjects that I shot, and the images are superb. They're just brilliant, crisp, sharp, and something that I would like to see in a lot more other phones as well. Now next thing is also tilt shift mode. So tilt shift mode जो है basically ये एक नया मोड है जिसमें हर एक चीज आप मिनिचराइज कर सकते हैं जब भी आप उसके पिक्चर लेंगे. जैसा मैंने ये सब सैंपल शॉट्स लिए हैं, आप उसमें देख सकते हैं. There is also a fun mode which you can actually use to capture some unique images. ऐसा नहीं है कि ये आप बहुत सारे images इसमें शूट करेंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है कि you might forget about this mode unless somebody reminds you of it or you see a picture somewhere. But it's a good bonus mode to have if you want to shoot something different. So now the Pro mode जो है, इसमें जो famous Hasselblad का लोगो है वो आता है जब भी आप इसे पुल अप करेंगे along with the orange button as well. वो पूरे हर एक कैमरा के इसमें फीचर होता है. बट जो OnePlus 9 Pro है, ये पहला फोन है जो अभी 12-bit RAW देता है in comparison with 10-bit RAW जो आपको most phones में मिलेगा. You also have the dual native ISO as well जो पहली बार phones में आया है. Now this ideally should be able to give you much better पुलिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग ऑप्शंस जब भी आप इसे पोस्ट प्रोसेसिंग में एडिट करेंगे इमेजेस को. बट ऑनेस्टली जितना भी मैंने यूज किया है इसका प्रो मोड, आई रियली थॉट दैट इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द यूजुअल. इट रियली लैक्स दैट एक्स्ट्रा जूस, एंड ऑनेस्टली पहले के जो मैंने OnePlus यूज किए हैं और जो नॉर्मल आप एंड्रॉइड फोन्स यूज करोगे, दैट्स प्रीटी मच लाइक अ हिट एंड मिस. बट यू डू हैव टू एडमिट दैट द रॉ इमेजेस दैट आर कमिंग आउट ऑफ दिस फोन आर मोर नेचुरल, एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन आप पोस्ट प्रोसेसिंग में इसको लेके काफी ट्यूनिंग और टोनिंग कर सकते हैं. सो एक और न्यू थिंग जो ये कैमरा के बारे में मुझे काफी अच्छी लगी वो ये है कि अभी ये जो डिस्टॉर्शन है, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन, इसे काफी करेक्ट करता है. नाउ ये पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन ये होता है बेसिकली जब आप कोई भी इमेज शूट करते हैं जिसमें आपको कोई बिल्डिंग्स या स्ट्रेट लाइंस दिखती हैं तो वो हमेशा थोड़ी सी टेढ़ी आती है. तो इस केस में जो OnePlus 9 Pro है, दैट हैज रियली वर्कड ऑन दिस कैमरा टू कट दैट आउट, एंड ये काफी अच्छी तरह चलता भी है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू pointing it at a subject and you see buildings or you see lines, तो ये करेक्ट करेगा, और एक ऑरेंज लाइट जो है आपको ये blink होगी which will show that it's correcting that distortion, which I thought was very good because it really makes a world of a difference in the images. क्योंकि images जो है, जो normally आप shoot करते हैं कोई building की या कोई subjects की जिसमें lines होती है, और अगर वो टेढ़ी आती हैं तो then it just throws that image off a little bit, and that is a good addition to have. Now when it comes to video capability, ये दोनों phones जो है that can shoot 4K up to 60 frames per second, but ये OnePlus 9 Pro जो है that can shoot 8K as well up to 30 frames per second, but that is only limited to 5 minutes. Now when it comes to Full HD as well, both of them again can shoot up to 60 FPS, और जो slow motion है ये 120 और 240 FPS पे भी shoot कर सकते हैं. but OnePlus 9 Pro जो है ये वापस 480 frames per second भी shoot कर पाएगा, but इसका resolution फिर drop हो जाएगा 720p पे. Now in this case as well, both of them actually have image stabilization as well, optical image stabilization all the way up to 4K. But one of the things that I really found funny is कि जब भी मैं ये OnePlus 9 Pro को super stable mode में use कर रहा था तो the flash would not work, which to me was like quite funny, because if you want to shoot something in super stable mode, especially in low light या कुछ आपको करना है night में, तो उसके लिए आपको definitely flash की जरूरत होगी. In terms of video performance, ये दोनों कैमरास जो है इनका video performance काफी अच्छा है, but iPhone 12 का जो video performance है that is much better, and honestly it's very difficult to compete with. So that was the comparison test between the OnePlus 9 Pro and iPhone 12. अब इसमें से कौन सा कैमरा आपको ज्यादा अच्छा लगता है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, बिकॉज इसमें काफी पर्सनल प्रेफरेंस कभी कभी यूज होता है. बट इन जनरल आई डेफिनेटली फील कि OnePlus 9 Pro के जो कैमराज है, दिस इज द बेस्ट कैमरा दैट दे हैव पुट इन एनी ऑफ देयर फोन्स येट. बट डज इट रियली लिव अप टू द Hasselblad billing? I really don't think so. The reason is because Hasselblad ने ये टाइम OnePlus 9 सीरीज में जो है उनको हेल्प किया है विद कलर टोनिंग एंड कलर मैपिंग. बट जितना भी मैंने ये फोन यूज किया है मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसके कलर टोनिंग या मैपिंग में ज्यादा डिफरेंस था एज कंपेयर टू द प्रीवियस OnePlus फोन्स. ऑफ कोर्स इसमें अभी जो नया प्रो मोड है इसमें ज्यादा एडिशनल फीचर्स दिए हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव द 12-bit रॉ एज कंपेयर टू द 10-bit रॉ जो आपको बाकी सारे फोन्स में मिलते हैं. यू ऑल्सो हैव द डुअल ISO नेटिव जो है वो भी काफी पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको हेल्प कर सकता है. बट देयर इज नॉट इनफ एंड इट्स स्लाइट हिट एंड मिस. तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें जिसमें आप देख के प्रो मोड में यू विल बी लाइक इन एब्सोल्यूट
it, off it, or you'll feel there's something exceptional. But generally, standalone as cameras, this phone definitely has very good cameras. And overall, I felt that OnePlus 9 Pro जो है ये काफी अच्छा पैकेज है. The reason is because now it also has a flatter design because के curved edges थोड़े से कम हो गए हैं, तो इसका experience जो है वो थोड़ा flatter and taller हो गया है. इसके specs भी अगर हम देखें तो जो Oxygen 11 है with the Snapdragon 888 chipset, ये काफी fast है. इसका जो display LTPO display 120 Hz का है, that's buttery smooth, और आप कुछ भी इससे करवाएंगे तो it will rarely basically lag behind in whatever you expect it to do. Of course, it's not perfect. There are still few things which can possibly be improved. But look, there are no phone which is perfect out there. So, if you like this video, then please make sure that you like, share and subscribe to our channel. Do subscribe to our channel. It is very important. It also motivates us. And do look us up on Instagram as well. We'll be featuring the review of the OnePlus 9 also very soon. So, stay tuned to our channel. And until next time, happy viewing.